Hello everyone, I'm Abhijit Patil presenting here a series of lectures on design of complex structures. I'll be covering design of columns, footings, slabs, beams, also some basics of software used in practice like E-tabs. So to stay tuned, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my next uploads. सो हम देख रहे हैं डिजाइन ऑफ कॉलम्स और ये है पार्ट 4 में हम कवर करेंगे डिजाइन न्यूमेरिकल ऑन हेलिकल रिइंफोर्समेंट और स्पाइरल रिइंफोर्समेंट. So before going into this part, you must watch my previous parts, part 1, 2, 3, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा ये पार्ट. So we will see the numerical. So design the reinforcement in a spiral column of 400 mm diameter subjected to a factored load of 1500 kN. The column has an unsupported length of 3.4 meter and is braced against side wall. Use M25 grade of concrete and Fe415 grade of steel. So जैसे कि पिछले टाइज वाले प्रॉब्लम में देखा था, पहला स्टेप रहेगा you have to check whether the column is short or slender. So L effective is calculated as K into L. So conservatively we can take K is equal to 1 क्योंकि ये सपोर्टेड है अगेंस्ट साइड वे. मतलब क्या, दोनों डायरेक्शन में या ये सर्कुलर कॉलम है तो चारों डायरेक्शन में बीम्स से ये कॉलम सपोर्टेड है. K value is 1. The effective length, unsupported length is given as 3400. So your effective length becomes 3.4 meter or 3400 mm. Slenderness ratio L effective, that is K into L upon T. So ये सर्कुलर कॉलम है तो यहाँ पर डायमेंशन एक क्या आएगा, dx dy की जगह डायमीटर आएगा d. So this ratio comes out to be 8.5, which is less than 12. So we can say that this is a short column as per clause 25.1.2. Minimum eccentricity निकालेंगे इसकी L effective upon 500 plus d upon 30. So ये values हमने put कर दिए. D here is diameter, so this is nearly 20 mm और 0.05 into d, ये जो वैल्यू है dx dy की जगह आप डायमीटर यूज कर रहे हैं because it is circular column. So 0.05 into diameter 400, so this also comes out to be 20 mm, which is nearly equal to your minimum eccentricity. So we can use formula for of clause 39.3 to calculate the axial load carrying capacity. So here, since this is a spiral column, we have to multiply this with 1.05. So 5% increase in load carrying capacity for spiral columns as per clause 39.4. So this version of PU formula we have derived in last part. So you can refer to that. I will not go in detail right now. So put all the values. Only unknown is ASC. So value of ASC now coming out to be 642 mm square. इसका percentage of steel है 0.51%. But minimum percent of steel हमें provide करना है 0.8% of gross area of the concrete. So 0.8% से आ रहा है 1005 mm square. So we have to provide 6 minimum bars. So let us see 6 bars of 16 mm diameter कितना आ रहा है 1206 mm square. So it is more than 1005 mm square. Okay. So vertical reinforcement, no issues. Only difference is this 5% increase we have to remember. Now design of spiral reinforcement. So for that we have to find core diameter denoted by dk. So core diameter is
जो भी कवर है वो दोनों साइड से हमें माइनस करना है। कवर छोड़ के जितना भी अंदर पार्ट है दैट इज कोर। सो 400 mm माइनस 2 टाइम्स कवर, दोनों साइड से, दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। So 400 minus 2 times 40, so it comes out to be 320 mm. Area of core ये लगेगा हमें, so pi by 4, 320 square. Now assuming a bar diameter of 6 mm, 6 mm कहाँ से आया? Vertical dimension, vertical bar diameter maximum है 16 mm का, so 16 upon 4 is 4 and 6 mm. So higher of these two is 6 mm. And pitch ST. So pitch ST निकालने के लिए what we have to do, we have to find this factor rho s. Again, this is from IS 456 clause 39.4. Volume of spiral reinforcement upon volume of core per unit length of column. Volume of spiral reinforcement upon volume of core per unit length of column. So volume of spiral reinforcement क्या होगा? 1 मीटर के लेंथ में, सपोज ये 1 मीटर है, स्पाइरल के बार का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया, into length of spiral bar in 1 meter length of the column. So ये जो spiral bar, spiral reinforcement है, इसका 1 मीटर कॉलम के लेंथ में ये spiral bar का लेंथ कितना आएगा, that we have to calculate. So how do we calculate that? Area is simply pi by 4 6 square, pi times 320 minus 6. So what is 320? Is core diameter. Okay, so this is the core diameter minus 6. Minus 6 क्यों? The diameter of the tie. So center to center distance हम निकालेंगे। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रिइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय एसटी। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ स्पाइरल रिइंफोर्समेंट। वॉल्यूम ऑफ कोर, हाउ मच इज दैट? एरिया ऑफ कोर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉलम विच इज इक्वल टू 1 मीटर। पर मीटर हम निकाल ले इसलिए। सो पाई बाय 4 320 स्क्वायर, दिस इज योर एरिया ऑफ कोर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 1 मीटर। सो ये दोनों वैल्यूज मिल गए, इनका रेशियो निकालना है। सो पुट ऑल द वैल्यूज हियर, विल गेट दिस। और कोड ने ये जो रो एस हम लोग बता रहे हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है। सो 0.36, दिस शुड बी मोर देन 0.36 AG अपॉन A कोर माइनस 1 FCK अपॉन FY। एंड हियर जैसा कि शेयर में हमने देखा था, द वैल्यू ऑफ FY शुड नॉट बी मोर देन 415 MPa, similar to what we have seen in shear reinforcement design in beams. अगर 500 MPa का भी स्टील है तो यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे FY की वैल्यू 415 है। वर्टिकल रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करते टाइम whatever FY is given that you have to use, but here not more than 415. So only thing is rho s की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे पुट कर दिए। AG gross area of the concrete, area of the core 25,415. So here you will get ST. It should be less than or equal to 28.4 mm. Then we have seen the clauses for maximum pitch and minimum pitch. So maximum pitch is 75 mm or core diameter upon 6, which is 53.3. Minimum pitch is 25 mm or 3 times the tie diameter, that is 6 times 3, 18 mm. So out of these three, 28 round figure we can provide as the pitch. So we have to provide 6 mm diameter spiral at 28 mm center to center pitch, and we have to show a neat sketch like this. So 6 bars placed like this. This is 6 mm spiral at 28 mm center to center. Clear cover as 40 mm.
This is the grade of concrete and steel. And in cross section, it will look like this. So the pitch is nothing but this distance. It's 28 mm by design and satisfying all the codal provisions. And these are the bars visible, vertical bars. So this completes the design of spiral reinforcement subjected to axial load, and the type of column is short column. Thank you.